Good morning, guys. Welcome back to my channel. So, today we are going to cover the practical part of the portfolio risk and return. I would literally suggest you to watch the remaining two videos that I've uploaded, I guess, 1 or 2 weeks back. Okay, that would provide you with the theory section of that particular chapter and also the formulas and the basics of that particular thing. Okay, as it has the maximum weightage in exam, I would like to cover all the practical questions without even reading the questions. I have cut copy pasted 40 questions that are given at the end of the book. Okay, so I would literally cover all the questions, but जो repetitive होंगे we would discuss them. We will not solve each and every questions. Okay, now before we move on forward, I would literally request you to write all the formulas on one particular sheet so that whenever you are solving a question, you can refer to that particular formula and you don't have to go back again and again. Okay, so this is the return of the portfolio. This is the risk of a portfolio. This is a covariance का formula. ठीक है, and this is when you need a minimum risk in your portfolio. Then when you need a zero risk, these are the two conditions. This is the formula for CML, this is for the beta, and this is for the CAPM. Okay. These all topics have been covered in part 1 and part 2 of the portfolio risk and return. Today we will be covering only the practical questions. Now let's do the first question. Okay. Okay, one rule for this particular video is that मैं first time पूरा solve करूँगी, but when same thing comes in the next question, I would not like to solve at all पूरा. ठीक है, let's say इसमें expected return. अब जहाँ भी next questions में expected return पूछा होगा, we will only discuss, we will not solve. ठीक है, let's begin. An investor has 78% of his funds invested in security A. तो दो securities है, ठीक है, यहाँ पे उसने क्या दे दिए, weights दे दिए, मतलब ठीक है, तो these are 78, these are 22. Okay, the risk and return दिया हुआ है. Risk it is saying कि 16.32 है. Okay, let's calculate the return first. 9.82% and 14.97%. Now, when I'm talking about the expected return of the portfolio, what I have to do, 78%, okay? Let's keep it in decimals only, everything, 78 by 100, okay? So it will come out to be 0.78 into 0.0982 plus 0.22 into 0.1497. The logic behind everything you can cover in another video. Today we will only be covering the practical part. Okay, let's try to solve it. 0.098. This will come out to be 0.0764, 0.22 into 0.1497. This is coming out to be 0.032. दोनों का सम कर लेते हैं. 0.764. It is coming out to be 10.93%. ठीक है, let's check our answer. ये कहते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है. क्या किया इसने, वेट्स इनटू रिटर्न्स. 7.66 इसलिए परसेंटेज में किए है, इसलिए वी आर गेटिंग अ बिग डिफरेंट आंसर 0.329. ठीक है, so it is coming out to be 10.95, 10.93 and 10.95. I don't think it makes lots and lots of difference. Okay, so it is all just because of the percentage and the decimals that we have used. It is not wrong. Okay, now let's calculate the risk of the portfolio. What is the formula? हम वेरिएंस निकालते हैं, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. दैट वुड बी माय रिस्क. तो W1 का स्क्वायर इनटू रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 1, W2 का स्क्वायर रिस्क ऑफ सिक्योरिटी 2 प्लस 2 into W1 into W2
correlation. Okay, we can just substitute all the values in this particular formulas. इसमें क्या आ जाएगा 0.78 का होल स्क्वायर, इसमें क्या आ जाएगा 0.22 का होल स्क्वायर, risk of security 1 that is 16.32%, तो 0.1632 का स्क्वायर, दिस 0.3286 का स्क्वायर, ये मैं बता चुकी हूँ, ये बता चुकी हूँ, ये ठीक है। तो P12 is the correlation, okay, this is the correlation, but हमें क्या दिया हुआ है covariance। तो covariance क्या होता है, if we go back to the formula list, तो covariance is nothing but P12 into this into this, ठीक है। तो I will be substituting these values in my formula. So instead of this I can simply write 0.43 divided by 100. Why did I do by 100? Because मुझे percentage में दिया हुआ, तो this will come out to be 0.043. ठीक है, once you solve this particular equation, you will get your rest. Do not forget to square root, because हमने यहाँ पे variance निकाला, हमने square निकाला है, ठीक है। हमें उसे कहना पड़ेगा to get the standard deviation, that is the risk. Let's see if we had written the correct formula. Risk of a portfolio, this is the formula that we have used. We can just simply check 0.78 का square, ठीक है, into 0.1632 का square plus 0.22 का square into 0.3286 का square plus 2 into plus 2 into weight 1 into weight 2, and instead of this we have substituted covariance, ठीक है। I hope this is clear. Let's move on to the second question. What does it say? पोर्टफोलियो में दो इन्वेस्टमेंट है, एक शार्प एक विलियम, इसको 70% कौन सा इन्वेस्टर है, इसको 30%। हमें निकालना है रिस्क एंड रिटर्न। अगेन इट इज वेरी इजी। रिटर्न कैसे निकालूंगी, रिटर्न निकालूंगी 20% का। आई ऑलवेज प्रेफर टू डू इन डेसिमल्स ओनली, कुछ गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। 0.70 प्लस 0.30 into 0.15. So this will come out to be my portfolio return. Now when I am talking about the portfolio risk, मेरे को क्या दिया हुआ है, coefficient of correlation, that is P12 is given to me, ठीक है। तो जब हम बड़ा सा फॉर्मूला लिखते हैं, एक बार लिख के देख लेते हैं फिर से, W1 का स्क्वायर इज, ठीक है। So this is the value that is given to me, and I have to substitute this particular value 3 times, +1 0 and -1 0 में तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, सिर्फ यही रह जाएगा, ठीक है। तो W1 is nothing but 0.7 का स्क्वायर, दिस इज 0.15 का स्क्वायर, W2 is 0.32 का स्क्वायर, सिग्मा 2 is 0.08 का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे अगेन यू कैन सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, एंड इंस्टेड ऑफ दिस कोरिलेशन P12 यू कैन राइट +1, ठीक है। तो फर्स्ट में +1 लिखोगे, सेकंड में 0 लिखोगे, एंड थर्ड में -1 लिखोगे। लेट्स चेक जो बोल रही हो ठीक भी है या नहीं। तो रिटर्न कैसे निकाला, 0.70 ये किया था हमने इंटू 20, 0.30 into 15, that comes out to be 18.5%. See, अब इसने क्या किया है, टेबल बना दिया। This is much simpler thing. Okay, we need to solve in order to check our answer once. तो ये solve कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। क्या आएगा इसका, 0.7 into 0.7 comes out to be 0.49 into 0.15 into 0.15, 0.0225, इसे अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.49. So the whole value coming here is 0.011025. Okay, let's try to solve the another value. 0.3 into 0.3 is 0.2.
0.09. 0.08 into 0.08 into 0.09. This value is coming out to be 0.000576. Let's try to solve this particular value. 2 into 0.7 into 0.3 into your 0.15 into 0.08 into 1. This is coming out to be 0.00504. We will add them. So it is coming out to be 0.016641. But this is, so I need to square root. It is coming out to be 12.9%. 12.9%. Okay. Now let's move on to the third question. Mr. Small's portfolio consists of two stock. एक stock X है, एक stock Y है. The standard deviation, मुझे क्या दिया हुआ है? Standard deviation, that is this, is 0.25 and 0.14. The covariance between the returns of two stock, मतलब I have been given covariance. Covariance का formula क्या होता है? This into P12. ठीक है? That is risk of security 1 into risk of security 2 into correlation, right? So I have been given this particular value as 0.045. मुझे क्या निकालना है? Calculate the coefficient of correlation. Such an easy question. मुझे ये निकालना है P12. That is the correlation. ठीक है? So I don't think there is an issue. बहुत easy question है. 0.25. Do not expect such easy question in the exam, please. तो इसकी जगह I can write 0.045. हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके we can simply find this particular value. देख लेते हैं इसने क्या किया. See, pxy is nothing but the covariance into sigma x sigma y. देखिए हमने यही आ जाएगा ना 0.45. Okay, 0.45. So it will come out to be 0.1285. Okay. Let's move on to the next question. What is the portfolio standard deviation? मुझे क्या निकालना है? पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस. इफ यू इन्वेस्ट ए में, यू हैव इन्वेस्टेड 25%. दीज आर योर weights, these are your W's. Okay, and you have invested B में 75%. that is the remaining investment that you have done. The standard deviation of this is 15%. And Bcom it is 10%. They have given you the correlation coefficient, that is they have given you P12 to be 0.75, and I need to find SD, that is the risk of a portfolio. How will I find the risk of a portfolio? Square निकाल देती हूँ, W1 का square, again same. Okay, I have been given all the values here, so there is no issue to find out this particular answer. See, they have written the formula, all the values have been given to you. You will just square root at the end and you will say the risk is 10.61%. Fifth question. The correlation coefficient, that is P12, is 0.50. Acid D and acid E. The acid D has a standard deviation of 40% and E has 60%. Weights have been given to me. 40% I have invested in this and 60% I have invested in this. What I have to find? The standard deviation of portfolio. Again, the same formula. Find out the variance, square root, all things have been given to you again. Very repetitive questions. Same. Okay, all the given data, just put on the value, square root at the end, and you will get 46.13%. Sixth question. An investor has 60% of money into risk-free T-bills. So, risk-free T-bills. These are your risk-free investment. He has invested
60%. These are the weights. Okay, तो जो बाकी का स्टॉक्स है उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 40%. ठीक है, 40% इंटू रिस्की स्टॉक्स. अर्निंग मुझे क्या दिया है? आई अर्न 5% हेयर and I earn 10% here. What is the standard deviation for a risk free? Is zero. I don't have risk in my treasury bills. ठीक है, that is why they are called the risk free T bills. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 15%. आई होप इसमें कोई इशू नहीं है. रिटर्न्स निकालना है, रिटर्न्स कैसे निकालूंगी? 60% इंटू 5% प्लस 40% इंटू 10% विल कम आउट टू बी रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो. बट जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने जाऊंगी पोर्टफोलियो का, द वैल्यू दैट आई विल बी यूजिंग एज दिस वुड बी 0. ठीक है, लेट्स चेक. एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाला? 60% इंटू 5%, 40% इंटू 10% कम्स आउट टू बी 7%. रिस्क कैसे निकाला है? सी, जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू बनती दिस, एक्चुअली वन ही था ना वो. ठीक है, तो दिस, ये वाली जो वैल्यू बनती है 0 हो जाती है बिकॉज यहाँ पे तो ये रिस्क इज 0. एंड जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होती है दैट इज 2 1 W2 risk 1 risk 2 P1 2, that will also become 0 because मेरा ये 0 है. तो मेरी कौन सी वैल्यू बची है? सिर्फ फर्स्ट वाली, दैट इज वेट 1 का स्क्वायर प्लस इनटू सॉरी रिस्क ऑफ वेट 2. ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी 6%. Now let's solve the seventh question. The standard deviation of return in security A, एक स्टॉक B है, एक A है and एक B है. The standard deviation, that is the risk, is 30% here and 20% here. The covariance, I have been given covariance, that is this into this into this is equal to be 0.006. मुझे निकालना है. These are very repetitive questions. I have to find out this. I have been given this as 0.3, this as 0.2 and this. So I can just cross multiply to find out the value of correlation coefficient. Let's check. ये किया, check है, this will come out to be 0.10. Let's solve 8th question. Glider and company has invested 5,000. So the total investment is 5,000. That is weight 1 plus weight 2 is 5,000. Okay. If he has invested X and Y में, X में he has invested 40% and 60%. This can I say 2,000 and 3,000, right? The expected returns are 10%. These are your weights. These are your returns. 10% and 8%. I have to find out the expected return in absolute term and percentage. तो absolute terms में कैसे निकालूंगी मैं? 2,000 पे 10%, I will be getting 200 from here. 3,000 का 8%, 240. I will be getting 440 as my return. ठीक है, अगर percentage माने में कैसे करूंगी? This is the return I am getting over my initial investment. So this is coming out to be 440 divided by 5,000 into 100. This is coming out to be 8.8%. Let's check the answer. So 440 and 8.8%. Okay. Try to do the 9th question. The following are the expected return and the risk of two securities. You have two options. Okay. Now, what is the two options? Either you invest 75% in A and remaining in B, or you invest 25% in A and 75% in B. See, this is very easy because आपको वही formulas use करके you have to calculate risk twice and return twice. ठीक है, but how will you compare? That is the most important question over here. ठीक है, जो चीज नहीं आई है वो नहीं है कि हम इसमें पोर्टफोलियो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क निकालेंगे, दैट इज रिटर्न अपॉन रिस्क. बिकॉज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ पे आपको
अगर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पे आपको आई एम सॉरी, आपको अगर यहाँ पे रिटर्न कम मिल रहा है तो आपको रिस्क भी कम लेना पड़ रहा है। बट इफ यू गो फॉर ऑप्शन 2, आपको यहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ रहा है। ठीक है, तो हाउ विल यू डिसाइड विच वन टू गो? ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पोर्टफोलियो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, दैट इज कैलकुलेटेड एज रिटर्न अपॉन रिस्क। ठीक है, तो किसका हायर है, ऑप्शन 1 का, एंड हेंस वी विल चूज ऑप्शन 1, दैट इज वी शुड इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन बी। यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला फॉर रिटर्न एंड रिस्क जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, दैट √1 एंड द वेट इनटू रिटर्न्स। ठीक है, द ओनली न्यू थिंग वाज है कि हम एक्सेप्ट कौन सा करें, एंड वी कैलकुलेटेड द पोर्टफोलियो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क। ठीक है, कैसे निकाला है हमने, रिटर्न अपॉन रिस्क। Now let's try to solve on the 10th question, which is actually a good question. Okay, we have done the same concept in chapter number 3, risk and return analysis. The kind of question is replicated here, but the only difference is that it is talking about the portfolio. Okay, there we were actually talking about कि हमें सिक्योरिटी ए या सिक्योरिटी बी डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क। ठीक है, हमने सब कुछ निकाला था, बट यहाँ पे हम टोटल निकाल रहे हैं, हम पोर्टफोलियो का कंसिडर कर रहे हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एक्सेल, बिकॉज अगर मैं ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ गई तो इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटीज में क्या करेंगे, 0.2, 0.5 एंड 0.3। द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज द सिक्योरिटी ए के हम रिटर्न्स लिख देंगे जल्दी से। ठीक है गाइज, आई एम वेरी सॉरी अगर मेरी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बिकॉज आई एम राइटिंग वेरी फास्ट है, मैं टाइप नहीं कर पाती जल्दी जल्दी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकाल लेंगे, वी विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, ये निकाला, फिर हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डेविएशंस। डेविएशंस कैसे आती है, द रिटर्न्स माइनस द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, देन वी विल डू डेविएशन का स्क्वायर। ओके, then we will talk about security B. Security B is 16, 5, 15 and 11. ठीक है, तो यहाँ पे भी we will do the expected return. This will come out to be okay. Before we move forward, हम इसे P into D square भी करते हैं। ठीक है, P into D square. This is this into this. ठीक है, this is the variance that I will get. Variance of security A। ठीक है, expected कैसे निकालू, this into this। I am sorry, ये इसके लिए। ठीक है, then again we will be finding deviation। डेविएशन कैसे निकालूंगी, इसका सम करके आई कैन जस्ट, आई एम डूइंग सम। डेविएशन कैसे आया, दिस माइनस 12, कंट्रोल वी कंट्रोल। ठीक है, डेविएशन का स्क्वायर, दिस इनटू, ठीक है, तो p इंटू डेविएशन का स्क्वायर, दिस इंटू, I will just sum it up. Sorry. In order to find, wait a minute, what did I do? Expected deviation का square. This will come out to be, okay, it is coming out to be 12 only. ठीक है, तो हम गए थे P into D1 into D2. Why did we do this? I will tell you. P into
D1 into, wait a minute, P into D1 into D2. ठीक है. Now see, covariance का formula is P1 into D1 into D2. So that is coming out to be 3. Covariance निकल गया. Now I have to find out the correlation. Correlation कैसे आता है? Correlation is nothing but covariance divided by risk of security A into risk of security B. ठीक है. अब ये रिस्क कैसे निकालूंगी? ये जो वेरिएंस है इसका स्क्वायर रूट कर दूं. ठीक है. तो रिस्क दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी ए. दिस इसका आई कैन डू रूट. वेट अ मिनट. ठीक है. एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी बी इज this raised to the power root. Now how will I find correlation? Is covariance divided by this into this. So it is coming out to be 0.24. Let's check. ठीक है. 0.24 एंड हमारा कोवेरियंस कितना आया? 3 एंड कोरिलेशन आया हमारा. नाउ लेट्स सॉल्व द 11th question. Calculate the optimal weight of an individual investment such that the variance of the portfolio is minimum. मतलब ऐसे हमें weights निकालने हैं, ऐसे हमें ratio of investment निकालनी है such that मेरा risk क्या हो? minimum हो. ठीक है. तो this is the particular formula that we will be using. Is this. ठीक है. We will be using this formula and we will be trying to calculate the weights. Now I'll just write it down the formula in order to have the reference. तो अगर हम A का निकाल रहे हैं तो this would be नीचे it's better कि तुम A सिग्मा A plus सिग्मा B का sorry सिग्मा A minus सिग्मा B का whole square का याद रखो because it's the same kind of a same good formula. ठीक है. Now if I put on the values, see it is already given in square percentage, so I don't have to do the square again once again. ठीक है. B covariance 3 A plus 12 minus 2 into 3. So this is coming out to be 9. This is 25 minus 6, 19. I hope 25 minus 6, 19. Right. ठीक है. देख लेते हैं. 9 upon 19, 0.47. 0.47. That means that I should invest in A 47% and in B I should invest 100 minus 47%, that is 53%. ठीक है. Now let's move on to the 12th question. Under what condition the risk will be eliminated? देखो eliminate करना है तो आपको ये दो कंडीशंस फुलफिल करनी होती है. ठीक है. अगर आप ये दो कंडीशंस फुलफिल कर लोगे तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. That's it for this particular video. I will be covering question number 13 to 26 in part 2. Before you actually close down this video, I will literally request you to subscribe and actually share, like, and comment this particular, video, because the moment I get the notification, it really boosts up my, motivation and to make another video. It's a request, otherwise, सब तुम्हारे ऊपर है. ठीक है. So thank you so much. Have a good day. Take care. All the best.